अब हम इस डोसे को चटनी और सॉस के साथ सर्व करेंगे। इसके साथ हमें किसी सांभर की ज़रूरत नहीं होती है, इसको हम ऐसे ही खा सकते हैं। ये डोसा खाने में जितना टेस्टी लगता है, देखने में भी उतना ही खूबसूरत लगता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे को अपना फीडबैक दें। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही रेसिपी लेके आती रहूँगी। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय। थैंक यू।